Hey everyone, what's up? Welcome back to my channel. I hope you all are safe and doing great. So today I'm going to share this beautiful, gorgeous, beginner friendly look for Eid. And आज का जो आई लुक है वो मैंने क्रिएट किया है मेरे फिंगर की हेल्प से एंड ऑल्सो ये सारे प्रोडक्ट्स super duper affordable है. So ये beginner friendly भी है and pocket friendly भी. So if you want to know then please keep on watching. Before starting, if you are new to my channel then hi, my name is Sharmili and I make videos on makeup, tutorials, hacks, vlogs and also hauls. So if you are interested in this kind of content then please subscribe to my channel and yep, let's get started. So first I'll start with the moisturizer and today I'm using Wow Skin Science Aloe Vera Gel. It is 99% pure aloe vera gel, hygienically extracted and carefully packed to retain its natural healing and rejuvenating benefits. And you guys know aloe vera gel can be used in different multiple ways and इसमें कोई भी harsh chemicals like mineral oils, silicones, paraben and synthetic fragrance नहीं है. Aloe vera juice gives intense hydration and minimizes ड्राइनेस एंड ऑल्सो ये इन्फ्लेमेशन को रिड्यूस करने में हेल्प करता है, कोलाजन बूस्ट करने में हेल्प करता है एंड ऑल्सो इट न्यूट्रलाइजेस जर्म्स एंड माइक्रोब्स एंड इसमें साइट्रिक एसिड भी है विच हेल्प्स लाइटन पिगमेंटेशंस एंड रिमूव टैन. यू कैन यूज एलोवेरा जेल एज योर मॉइस्चराइजर एंड एज योर प्राइमर बिफोर मेकअप और you can mix it with your DIY face pack and DIY scrub. Like you can mix it with your coffee powder and make your own DIY face scrub. And I specially use aloe vera gel as my after shaving and before shaving gel because it has soothing and healing properties. So I'll be linking this amazing product in the description box below for you to check out. And Wow ने एक initiative लिया है by the end of 2022 they will plant 1 crore ट्री. सो जब भी आप कुछ परचेज करते हो फ्रॉम देयर वेबसाइट आपको मिलता है एक ऐसा सीड पाउच जिसे आप प्लांट करके बन सकते हो प्राउड प्लांट पेरेंट. वाओ स्किन साइंस के हर एक प्रोडक्ट के पीछे आपको मिल जाएगा QR कोड जिसे आप स्कैन करके प्रोडक्ट की ऑथेंटिसिटी चेक कर सकते हो एंड लेट्स बी वाओ नेचुरली. बिकॉज आई हैव कॉम्बिनेशन स्किन सो आई नीड अ प्राइमर सेपरेटली एंड आई एम यूजिंग हियर इनसाइड 3-in-1 प्राइमर. इट्स अ सिलिकॉन बेस्ड प्राइमर सो इट्स गोना फिल माय पोर्स एंड ये मेरे स्किन को एक इवन smooth texture देगा for my foundation blending. For the foundation I have inside HD dewy finish concealer high coverage concealer foundation and इसे लेके मैं अपने पहले तो जहाँ पे आई है पिगमेंटेशन प्रॉब्लम वहाँ पे मैं अप्लाई करूँगी. मैं ज़्यादा अमाउंट पे अप्लाई नहीं करूँगी बिकॉज समर है एंड वी डोंट वांट टू लेयर अप आवर स्किन. सो मैं एक डैम्प स्पंज के हेल्प से मेरे पूरे फेस पे इस फाउंडेशन को ब्लेंड कर लूँगी डैबिंग मोशन फॉलो करके. एंड यू कैन सी दिस फाउंडेशन हैज़ अ वेरी स्किन लाइक dewy finish and also it has a medium to high coverage which I absolutely love and it feels very lightweight on skin. Next I'm using Inside HD concealer and it's one of my favorite affordable concealers and इसे लेके मैं बहुत ही कम अमाउंट पे अप्लाई करूँगी मेरे आईज के अराउंड एंड ऑल्सो मेरे नोज के ऊपर एंड थोड़ा सा चिन पे अप्लाई कर लूँगी. इससे ज़्यादा मैं आज अप्लाई नहीं करूँगी एंड आई एम यूजिंग हियर द सेम ब्यूटी ब्लेंडर टू ब्लेंड दिस कंसीलर आउट एंड यू कैन सी हाउ ब्यूटिफुली इट ब्लेंड्स एंड इसका कवरेज भी इज़ लाइक वेरी नाइस हेल्दी कवरेज. मेरे स्किन को बिल्कुल भी अंडर को ड्राई नहीं करता है. Next to set my concealer I'm using Mars loose powder in the shade banana and इसे मैं एक पाउडर ब्रश के हेल्प से लेके मेरे आईज के अराउंड जहाँ पे मैंने कंसीलर अप्लाई किया है वहाँ पे पहले सेट कर लूँगी एंड देन मैं स्लाइटली पूरे फेस को भी सेट कर लूँगी. Next up I have Faces Canada blush. It's their new launch and इसे लेके मैं अपने फेस के हाईएस्ट पॉइंट पे अप्लाई करूँगी. For my eyes I have today Mars I belong to your purse या my purse I don't remember but this eyeshadow palette is so beautiful. The color story is beautiful, perfect for beginner and this is super affordable and super pigmented. So मैं फिंगर की हेल्प से लेके ये ब्राउन शेड को लेके लाइक ऑरेंजी शेड को लेके मैं अपने आउटर कॉर्नर पे अप्लाई करूँगी एंड यू कैन सी मैं धीरे धीरे इसे बिल्ड कर रही हूँ. मैं एक साथ ज़्यादा अमाउंट पे अप्लाई नहीं कर रही हूँ and also I'm following my eye shape and मैं wing shape में इसे blend कर रही हूँ outer corner की तरफ. So take your time and blend your eyeshadows. अगर आप finger tip से blend कर रहे हो तब भी no worries, बस आप time लेके blend करते रहो आपका eyeshadow लगेगा ही नहीं आपकी finger tip से apply किया है. Next I'm applying this dark brown shade मेरे outer corner पे and इसे लेके मैंने एक थिक विंग शेप में अप्लाई करूँगी पहले एंड मैं ब्लेंड करूँगी इसे इनवर्ड एंड आउटवर्ड डायरेक्शन पे एंड धीरे धीरे मैं इसका जो इंटेंसिटी है ना उसे बिल्ड करूँगी.
उसके बाद मैं फिर से फर्स्ट ट्रांजिशन शेड को लेके मेरे फिंगर की हेल्प से और एक बार अप्लाई करूँगी मेरे क्रीज पे एंड आउटर कॉर्नर पे टू ब्लेंड दिस शेड विद दैट ब्राउन शेड जो मैंने इसके ऊपर अप्लाई किया है. For the color, I have SFR Color Beauty Eyeshadow Palette and I'm picking this shimmery sky shade with my finger. इसे लेके मैं अपने eyelid पे अप्लाई करूँगी, 1/3 eyelid पे अप्लाई करूँगी and you can see how beautiful the pigmentation is. एंड मैं फिर से एक बार डार्क ब्राउन शेड को लेके मेरे आइज के कॉर्नर पे अप्लाई करूँगी, विंग शेप में इसे ब्लेंड करूँगी. फॉर द आई लाइनर आई एम गोना यूज टुडे स्विस ब्यूटी पेन आई लाइनर. इट ग्लाइड्स वेरी स्मूथली. इट इज ब्लैक. इट ऑलमोस्ट फील्स लाइक अ लिक्विड आई लाइनर. यू कैन ड्रॉ थिक एंड थिन लाइन विथ इट. सो मैं इसमें एक थिन विंग लाइनर ड्रॉ कर रही हूँ मेरे आई लैश के एकदम क्लोज. इसे ड्रॉ करूँगी मैं. आई डोंट वांट कि कुछ हैवी लगे मेरे आइज पे आज. बट ओके, सो नेक्स्ट फॉर मस्कारा आई हैव एसेंस का मस्कारा. आप कोई भी मस्कारा अप्लाई कर सकते हो. जस्ट मेक श्योर कि आपका जो मस्कारा है ना वो वॉल्यूम प्रोवाइड करता है बिकॉज आई एम नॉट गोइंग टू अप्लाई एनी फॉल्सेस टुडे. Last I'm going to use this brown shade and इसे लेके मैं अपने nose contour करूँगी. You can skip this but you guys know I love to contour my nose. For my highlighter I'm using Mars liquid highlighter and इसे लेके मैं अपने finger tips apply करूँगी and this is a beautiful highlighter. एक बार ये apply हो जाए उसके बाद जब ये dry हो जाता है ना उसके बाद इसको remove करना जगह से is impossible. And also look at the shine you guys. It's beautiful. It has no harsh shimmer particles and it makes your skin super dewy and healthy and whatnot. I love this highlighter so much. It's super affordable. Now I'm just brushing my eyebrows. You can use any eyebrow product that you have. To set my makeup I'm using Swiss Beauty Natural Makeup Fixer and इसे लेके मैं अपने eyes को cover करते हुए पूरे face पे apply कर लूँगी and अच्छी तरह से इसको dry होने दूँगी. For my lips I have Insight Matte Lip Ink. आप अपने हिसाब से अपना lip color choose कर सकते हो and this is my final look. And also ये जो मैंने apply किया है sky color, आप इसके जगह कोई भी और color का शिमरी शेड अप्लाई कर सकते हो आपके ड्रेस के हिसाब से. चाहे वो येलो हो, ग्रीन हो, पिंक हो, रेड हो, आप अपने आउटफिट के हिसाब से सिलेक्ट कर लेना. एंड जो मैंने ये ज्वेलरी पहना है ना ये मैंने परचेज़ किया है ऑफलाइन. अगर मुझे इसका लिंक मिल जाता है ऑनलाइन तो मैं ज़रूर इसका लिंक दे दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, चेक कर लेना जाके. एंड ऑल्सो ये दुपट्टा का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो गाइज. आई होप यू गाइज फाउंड दिस वीडियो हेल्पफुल एंड yeah, that's it. I'll see you guys again in my next video. Till then, bye, take care and I love you all. Eid Mubarak.